and welcome to Kashmir Now. I'm your host Pratiksha Mishra. Let's take a look at what made news this week. Gilgit-Baltistan residents continue protests against the administration, demand subsidy on wheat and essentials. People in Gilgit-Baltistan blame administration for lapses in internal security, demand terrorists involved in December 2 bus attack be brought to justice. Viksit Bharat Sankalp Yatra reaches remote areas of Anantnag and Punch. Thousands of citizens get doorstep government services. Government undertakes restoration of Chuntikul historical area in Shrinagar. And in our special section of Incredible India, we take you to have a glimpses of Karwai Virasat 2023 held in the culturally vibrant city of Shimla. Massive protests are raging across the illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan. The patience among the people of Gilgit-Baltistan is waning as the administration has still not agreed to reinstate subsidies on wheat and other essentials. Members of various civil society, organizations, trade unions and Awami Action Committee have joined hands and leading the protests against the proxy administration of Islamabad in the region. We have a report. The protests against the increased wheat prices and administration's decision to revoke subsidies on essentials are still raging in the illegally occupied territory. The patience among the people is waning. They have taken to the streets and organizing protests all across Gilgit-Baltistan region. Members from various civil society organizations, trade unions and Awami Action Committee are leading the protests against Gilgit-Baltistan administration and Islamabad. इतने बड़े इलाके में जो गंदम हर घर का इशू है, ये किसी एक एक्शन कमेटी का, शाहजम खेल का, आतिफ सलमान का, किसी नंबरदार का नहीं है। अगर ये हर घर का इशू है, इस महंगाई से हमारे ऊपर एक महंगाई का बोझ गिरा है, तो फिर हमें घरों से बाहर निकलना होगा। अगर हमारे लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, एहतिजाज में हिस्सा नहीं लेंगे, दिलचस्पी नहीं लेंगे, अगर ये हाल रहा तो 5200 नहीं 12,000 हमारे ऊपर हुकूमत इसका रेट बढ़ाएगी। The leader said the wheat subsidy is an inherent right of the people of Gilgit-Baltistan. They slammed the administration for removing the subsidy and appealed to the masses to embolden the protests against the local administration and Islamabad regime. इस मुहिम को हमने घर-घर पहुंचाना है। इस आगाही मुहिम को हर बच्चे तक पहुंचाना है, हर कस्बे तक पहुंचाना है, क्योंकि ये हमारा बुनियादी हुकूक है। ये आप इसको मामूली व बदले, ये उसूल छोड़ा गया है। ये उसूल इसलिए छोड़ा है कि अवाम को देख रहे हैं कि आया ये अवाम अपने हक के लिए आगे आते हैं या नहीं आते। The protesters said the administration is concentrating more on suppressing the voices of people demanding their basic human rights rather than taking cognizance of the unfinished infrastructure projects in the region. यहाँ राबिता सड़कें और पुलें इन इलाकों में जो है एक साल से राबिता मुनक़ता है। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान ने मंजूरी देने के बाद आज तक पुलों का काम शुरू नहीं होता है, आज तक चिनाइजेशन का काम मुकम्मल नहीं होता है। तुम्हें इनकी निगरानी करने के बजाय लोगों के लिए, हुकूक के लिए जब आवाज उठाते उनकी दबाने की कोशिश करते हैं। The people have warned that if the administration failed to meet their demands, they would intensify their protests and observe shutdown and wheel jam strikes across the region. The illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan has been mired in several issues for the last many years. The removal of wheat subsidy has further aggravated their problems. Other than wheat subsidies, the people are suffering from the issues such as load shedding, high electricity bills, and imposition of unreasonable taxation by the local government.
in Gilgit-Baltistan expressing solidarity with the victims of December 2 terrorist attack on a bus in Diamir protested against the administration for the pregnable security in the illegally occupied region. The people demand the perpetrators of terror attack should be brought to justice. We have a report. हम तमाम ट्रांसपोर्टर आवाम को लेकर रोड पे आएंगे और उस वक्त तक हम गिलगित बल्तिस्तान में ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम शटर डाउन कर देंगे जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होते. A large number of people in Gilgit-Baltistan gathered to express their sorrow and condolences for the victims of December 2 terrorist attack in Diamir district. On December 2, a local bus near Chilas town of Diamir district was ambushed by some unidentified terrorists. In the attack, 9 people lost their lives and many sustained grievous bullet injuries. The people blamed the administration for the internal security lapses and demanded that the perpetrators of the heinous terror attack be brought to justice. हम आपके साथ चारों में खड़े हैं उस वक्त तक जब तक आप फैसला कर लें कि इन लोगों को जो मखसूस लोग हैं उनको पकड़ें, उनको सजाएं दें, हम आपके पीछे खड़े हैं. इसके आड़ में अगर 99% आवाम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, अगर उनकी चादर और चादरवारी के साथ खेलने की कोशिश की गई, उसकी इजाजत कोई भी नहीं देगा. It has remained a regular practice of the police in the illegally occupied territory to raid the local houses and disturb the general public when any such terrorist incident takes place in Gilgit-Baltistan. The protesters believe the foot soldiers of Islamabad harass locals in the illegally occupied territory rather than searching their own backyard for terrorists. Pakistan has been globally lambasted at several international forums for sponsoring terrorism and providing safe havens to UN-designated terrorists. गिलगित बल्तिस्तान पूरा सोगवार है और पूरा गिलगित बल्तिस्तान इस मामले में गमजदा है. तो जो गमजदा खानदान है उनकी ताज़ियत के लिए इंशाल्लाह हम जाएंगे और इस सिलसिले में अगला जो वीक है उसी के अंदर ये चीज़ें इंशाल्लाह प्लान होंगी और हम जहाँ जहाँ शातें हुई हैं, गदर के अंदर हुई हैं, हिंदानगर के अंदर हुई हैं और बल्तिस्तान के अंदर जो शातें हुई हैं उन गमजदा खानदान के पास जाएंगे, उनकी ताज़ियत करेंगे. हमने एक टीम बनाया हुआ है तो इंशाल्लाह ये टीम लेके हम गिलगित बल्तिस्तान के उन लोगों के पास जाएंगे जो हालिया दिनों हुडूद के सामने जो दहशतगर्दी के लिपेट में आ गए हैं, जिनके जाने ज़ाया हो गए, शहीद हो गए हैं और जो जख्मी हैं. इंशाल्लाह हम उनके घरों में जाके उनकी इयादत करेंगे और हम ये पैगाम लेके गिलगित बल्तिस्तान के पूरे अजला के अंदर जाएंगे और इंशाल्लाह ये अमन का हम पैगाम देंगे और इनसे इजहार ताज़ियत करके हम इंशाल्लाह आएंगे. The residents expressed their solidarity with the victims' families and have resolved to restore peace in Gilgit-Baltistan. They demand the Gilgit-Baltistan administrators should catch the terrorists involved in the attack on the local bus in the Diamir district. Moving on, the government schemes and policies by the centre are now reaching the remotest districts of Jammu and Kashmir. To provide the benefits of government-sponsored scheme and policies to even the last citizen, the government has launched Viksit Bharat Sankalp Yatra to provide doorstep services. In Anantnag and Poonch districts of Jammu and Kashmir, a large number of enthusiastic individuals participated in Viksit Bharat Sankalp Yatra and the most prosperous nation on the globe by 2047. We have a report. The Government of India is reaching the remotest corners of Jammu and Kashmir with its Viksit Bharat Sankalp Yatra. It is an initiative by the government to provide benefits of all these centrally sponsored schemes to every individual in the region. The Viksit Bharat Sankalp Yatra camps in Anantnag attracted a large number of enthusiastic individuals who actively participated in the event and availed on-the-spot schemes and services from the government.
जिन लोगों को बेचारों को मतलब आप समझ सकते हैं कि जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम्स है या जिनको अनदर कोई प्रॉब्लम है, जिन तक ये स्कीमें नहीं पहुंचती है, उन तक ये स्कीमें बड़ी आसानी से पहुंच रही हैं। लोग बहुत खुश हैं। आप देख रहे हैं कि पब्लिक यहाँ आ रही है। जो ये गैस उज्ज्वल स्कीम है या मेडिसिन स्कीम्स है या जितनी भी यहाँ पे स्कीम्स, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है और हर एक इंसान तक ये स्कीम पहुंचाई जा रही है। There was a great enthusiasm among the people of Anantnag and several other districts for the Viksit Bharat Sankalp Yatra. The outreach initiative in the Union Territory of Jammu and Kashmir and other states of India is the largest ever to reach out to the people, create awareness and provide benefits of several welfare schemes at their doorstep. A gamut of schemes and services is being rolled out covering sanitation, essential financial services, electricity, access to LPG cylinders, housing for the poor, food security, proper nutrition, reliable health care, clean drinking water and many more. The people hailed efforts of the government and resonated with their objective of making Bharat a developed and the most prosperous nation by the year 2047. इससे हमें बेहद फायदा मिला है, क्योंकि इससे पहले हमें ऑफिस पर जाना पड़ता था। कभी हम ये सुनते थे कि अफसर फलानी काम पर चला गया, हम वेट करते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं कि वो मीटिंग में बिजी है, इसलिए हमें सिर्फ चक्कर ही काटने पड़ते थे। लेकिन जब से ये यात्रा शुरू हुई है, तब से तमाम मुलाजमीन बिल्कुल हमारे घर तक पहुंचते हैं और हमें मौका फराहम करते हैं कि आपको किस चीज़ की कमी है, आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है और हम सॉल्व करके देंगे। और आज मैं ये कहूँगा कि वाकई तौर आज ये डिजिटल इंडिया और डिजिटल जम्मू कश्मीर बन गया है और बिल्कुल हमें घर तक ये मुलाजिम पहुंच जाते हैं और उन स्कीमों के बारे में हमें जानकारी देते हैं जिन स्कीमों के बारे में हम बिल्कुल बेखबर थे। और जब हमने इन स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल की है, तब से हमें बहुत फायदा मिला है। मुझे लगता है कि जिस तरह से अनंतनाग की आवाम माननीय प्रधानमंत्री सर के विजन के साथ कि हम अपने देश को कैसे विकसित बनाए और उसके लिए जो संकल्प ले रहे हैं, उसके साथ बड़ी खासी मात्रा में पूरी जनता जुड़ रही है। और मुझे लग रहा है कि हर जो भी पर डे हर दिन 16 होते हैं, 16 पंचायत कवर होती है और हर पंचायत में एक उत्सव का माहौल होता है। लोग बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। हम भारत को तरक्की याफ्ता साल 2047 तक बनाने का अहद करते हैं। In Jhalas Panchayat of Poonch district, thousands of individuals pledged during the Viksit Bharat Sankalp Yatra to bring a positive transformation and were ready to join the nation building process initiated by the government. The functionaries from various government departments were present in service of the people to aware them about the centrally sponsored schemes and to make on-spot registrations for providing them benefits. अब गवर्नमेंट जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक लोगों तक आ रही है। जितनी भी गवर्नमेंट की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उन सब का सैचुरेशन जो है हमें विकसित भारत स्कीम में करना है। जैसे आरडीडी की हमारी अपनी स्कीम है PMAY, तो उसके तहत हमारे तो इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी जो इंसान जिसके पास घर नहीं है वो बिना घर के ना रहे। इसी तरह बाकी सारे डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर हो गए, हॉर्टिकल्चर हो गए और बैंक से लीड बैंक स्कीम्स के अंडर जो भी जितनी भी हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उनके सारे यहाँ पे फंक्शनरीज आए हुए हैं और ऑन स्पॉट जो है रजिस्ट्रेशंस की जा रही हैं। जैसे हेल्थ कार्ड, आयुष्मान गोल्डन हेल्थ कार्ड हो गया, सॉयल हेल्थ कार्ड हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस विकसित भारत यात्रा से जुड़े और देश की उन्नति और प्रगति में अपना पूरा योगदान दें। Viksit Bharat Sankalp Yatra programs are being organized in every nook and corner of Jammu and Kashmir. With enthusiastic and energized people participating in large numbers in Viksit Bharat Sankalp Yatra, the juggernaut of growth and prosperity for the nation has gained a fresh momentum. The capital city of Jammu and Kashmir, Srinagar, is one of the most enchanting tourist spots for visitors.
In order to cater to an ever-increasing tourist footfall in Srinagar, the government is putting concerted efforts to improve the city's infrastructure along with preserving its cultural heritage. The restoration of Chuntikul area in Srinagar is one of the testament of government's endeavours to preserve the city's historical essence along with giving boost to its modern outlook. Let's have a look. The city of picturesque Dal Lake, Srinagar, has turned even more beautiful with several infrastructure development projects undertaken by the administration. The restoration of Chuntikul area in Srinagar under the Smart City project stands as a testament to urban rejuvenation efforts. Chuntikul, an integral part of Srinagar's cultural heritage, witnessed a comprehensive overhaul aimed at preserving its historical essence while embracing modernity. चूंटकुल अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप कभी भी जाएं किसी भी सीज़न में वहाँ पे, तो आपको एक तरह की शांति महसूस होती है, एक तरीके का सुकून महसूस होता है। वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगता है। चिनार है वहाँ पे, शेडेड एरिया है, प्लस वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत पानी रहता है चूंटकुल में, तो पानी के आसपास लोगों को बड़ा अच्छा लगता है वैसे भी। तो चूंटकुल वाला एरिया को हम चाह रहे थे कि हम उसको भी अपग्रेड करें। उसकी जो चलने की जगह है या जो भी उसका रास्ता है चूंटकुल का, तो जो बंड है, तो बंड को हमने उसको अपग्रेड किया है। तो बंड में अब लाइटिंग है, बैठने की जगह है, इट्स अ वॉकिंग एंड साइकिलिंग ट्रैक ऑल्सो। Renovation of dilapidated structures, streetscape improvements, and the integration of smart technologies like solar street lights and provision of cycle track has enhanced the overall appeal of Chuntikul. The view of a water body and a walkway adorned with rustling chinar leaves in winter is attracting locals and tourists alike to experience the serenity this place has to offer. बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। और यहाँ तो पहले जब हम थे छोटे, यहाँ चलना ना सके, अब उन्होंने साइकिल भी रखा है। स्मार्ट सिटी अच्छी, ये डलगेट मेन सिटी है, यहाँ से बहुत अच्छी इन्होंने बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। टाइल्स भी लगाए, पाथ भी बहुत अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। क्योंकि जब टूरिस्ट आता है हमारे श्रीनगर में, वो देखता है हाँ यहाँ अच्छा साफ सुथरा है सब, तो और टूरिस्ट आएंगे यहाँ। Among youngsters, there is a sense of enthusiasm and excitement towards Chuntikul renovation project. The inclusion of a dedicated cycling track, walkway, and the provision of rented bicycles have further added convenience for the youngsters and tourists, incorporating an eco-friendly experience. जो यहाँ पे इन्होंने सहूलियत डाली है साइकिल्स की, उनसे भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। और जो यहाँ पे व्यू पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स भी इन्होंने बनाए हैं, जबकि बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लोग देखते हैं तो उनको भी फिर मज़ा आता है यहाँ पे। लेकिन जब पहले थे यहाँ पे बहुत खस्ता हालत थी, तो इस वजह से स्मार्ट सिटी ने जो ये कदम उठाया है ये बहुत अच्छा है। और जो उन्होंने साइकिल्स वगैरह भी डाली है, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है, खास करके नौजवानों को। The restoration of Chuntikul under Smart City project represents the commitment of the government in infrastructure development and preservation of historically significant areas of Jammu and Kashmir. And now, let's take you to the cultural city of Shimla, which recently celebrated a two-day cultural event, Sahitya Utsav Jasn-e-Adab Cultural Karwa-e-Virasat 2023. The event, held by Cultural Karwa in association with the Ministry of Culture and Tourism, was an initiative to connect youth with their cultural roots. Let's have a look. The city of Shimla in Himachal Pradesh is a perfect blend of modern thoughts and traditional values. Shimla, also called Simla, has always remained untouched by the growing globalization and has preserved its rich culture and tradition for centuries.
In a bid to promote India's rich heritage and to connect youth with their cultural roots, recently a two-day Sahitya Utsav Jashn-e-Adab event was organized by Cultural Karwa in association with the Ministry of Culture and Tourism in the Hill Resort of Shimla. The Cultural Karwa is a 13-year-old organization that embodies a huge number of artists from different artistic fields such as theatre, music, poetry and art. Sahitya Utsav Jashn-e-Adab Cultural Karwaएं Virasat 2023 embodies the essence of the country's heritage, which lives on in the form of Hindustani art, culture and literature. People from different corners of the city gathered in large numbers to witness this unique display of artistic extravaganza. जी अगर आप देखें इसमें कल्चरल कारवां वैसे तो 13 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जश्न अदब साहित्य उत्सव। हमारी मुहिम है कि अपने यूथ को अपनी बुनियाद को अपनी जो यूथ है वो अपनी बुनियाद से जुड़े, अपने रूट से जुड़े और इसके लिए आपको एफर्ट्स तो लेने होंगे। तो कल्चरल कारवां हमने एक 3-4 साल पहले जब हम 10 साल जश्न हुआ हमारा तो हमने कोशिश की कि एक कारवां लेके चलते हैं। अभी तक हमने दिल्ली में किया, दिल्ली में बहुत सारे लोग आए, दुनिया भर के आयोजन होते रहते हैं दिल्ली में, लेकिन उससे हम क्या करते हैं कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कामयाब होते भी हैं लेकिन सिर्फ एक शहर तक। तो कोशिश हमने ये की कि इस कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं और बाहर भी वहाँ तक हम पहुँचें और इसको जो है एक व्यापक स्तर पर जो है लोगों से जोड़ें। Cultural Karwa is a movement in itself in a time like now when youths are mostly found engrossed in their mobile phones and lost in the virtual world. The event rendered a platform for youth to connect with and learn from many Padma Shri awardees from distinct fields from across India such as writers, comedians, singers and actors who graced the event. The two-day literature and cultural festival was followed by panel discussions, qawwali, cinema, poetry and a brilliant performance of folk and Sufi singing in the beautiful and powerful voice of the music enthusiast group from Rajasthan. दिक्कत क्या है, इस चैनल ने, टीवी चैनल ने लोगों को घर में कैद कर दिया और भाईचारा पहले गांव में मेले लगते थे, लोग इकट्ठे होते थे तो भाईचारा बढ़ता था। अब हम एक कमरे में कैद होकर रह गए। नाटकों से, इन सब चीज़ों से, कवि सम्मेलन से, मुशायरे से लोग घर से बाहर निकले, तब जाकर के भाईचारा बढ़ता है। Today, the Cultural Karwa has covered more than 10 states and is endeavoring to bring it to other Indian states. Culture enthusiasts opine that events like these should be held regularly as art and literature have the power to heal people and will help to deal with today's stressful lifestyle. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care. Zalam kotvan vesiye yarasvan Talaylati yarasvan